Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we are going to discuss major headlines of the Hindu. तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली हेडलाइन से, जो कि है 3 जज बेंच टू रिव्यू SC verdict on poll promises. अवेलेबल है ये पेज नंबर 1 पे और रिलेटेड है पेपर 2 Polity and Governance से. In this article, we have to know about the section 123 of the Representation of People Act and recent Supreme Court observation in दिस कंटेक्स्ट. तो रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है टू रिकंसिडर a 2013 judgment which held that pre-poll promises made by the political party cannot constitute a corrupt practice under the section 123 of the Representation of People Act, right? Our next important headline is FIFA lifts ban on Indian football बॉडी. अवेलेबल है ये पेज नंबर 1 पे और रिलेटेड पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से. इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना, फीफा के बारे में. तो रिसेंटली क्या हुआ है, फीफा ने लिफ्ट किया है बैन विच वाज इम्पोज्ड ऑन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट टर्मिनेटेड द मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स. अगर हम फीफा की बात करें तो इट एग्जिस्ट टू गवर्न फुटबॉल एंड टू डेवलप द गेम अराउंड द वर्ल्ड, राइट? आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज केरला हाई कोर्ट वांट्स clampdown on illegal religious places. अवेलेबल है पेज नंबर 3 पे और रिलेटेड पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो about the recent ruling of the Kerala High Court on the functioning of religious places and prayer halls and what are the constitutional provisions linked to it. तो recently क्या हुआ है, Kerala High Court has asked the Chief Secretary and State Police Chief to issue orders to prevent the illegal functioning of the religious places and the prayer halls. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें तो आर्टिकल 26A of the Constitution states that subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Recently, court observed that doesn't mean that they can construct religious places in every nook and corner of the country, right? Our next important headline is SC raises Karnataka iron ore mining ceiling limit. Available है पेज नंबर 5 पे और रिलेटेड पेपर 1 ज्योग्राफी से. In this article we have to know about the distribution of iron ore in India. तो रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने रेज की है सीलिंग लिमिट ऑफ आयरन ओर माइनिंग फॉर बिलारी, चित्रदुर्ग एंड तुमाकुरू district in Karnataka, saying conservation of ecology and environment must go hand in hand with the spirit of economic development. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें आयरन ओर की तो इंडिया इज एंडोड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर. एंड कौन से दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आयरन ओर की जो कि फाउंड इन आवर कंट्री, कौन से हैं वो? दे आर हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, राइट? और आयरन ओर माइंस जो हैं दे अकर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ द कंट्री which adds to their advantage. Around 95% of the total reserves of iron ore is located in कौन से स्टेट्स में? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, राइट? Our next important headline is High Court creates awareness in school on sexual abuse. अवेलेबल है पेज नंबर 5 पे और रिलेटेड पेपर 1 सोशल इश्यूज से. इस आर्टिकल में हमें क्या जानना है, व्हाट आर द रीसेंट ऑर्डर ऑफ केरला हाई कोर्ट ऑन सेक्सुअल अब्यूज एंड वी हैव टू नो अबाउट द अदर लॉज एंड लेजिस्लेशन गवर्निंग सेक्सुअल अब्यूज, राइट? तो रिसेंटली क्या हुआ है, केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है किसको, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को to issue orders for making a prevention oriented program on sexual abuse as a mandatory part of curriculum. Prevention oriented program on sexual abuse is a facet of the right to education contemplated under article 21A of the constitution. ठीक? Our next important headline is a draconian law that needs to disappear. Available है पेज नंबर 6 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से. In this article we have to know about the genesis of the Armed Forces Special Power Act, provisions, objectives, criticism and court stands and what lies ahead. इसकी genesis की बात करें तो it can be traced to the Armed Forces Special Power Ordinance of 1942 which was enacted by the British to subjugate the rebels in the country during Quit India movement, particularly in Assam and Bengal in October 1942, right? The law continues to be enforced in its new format as the Armed Forces Special Power Act
1958। अगर आपको और अच्छे से जानना है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में तो इसका लिंक है, यू नो राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज पुत्तस्वामी एंड फीडिंग प्रॉमिस ऑफ अ राइट। अवेलेबल है पेज नंबर 6 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन द केस ऑफ जस्टिस के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंस क्या थी इस जजमेंट की, ग्राउंड रियलिटी क्या है अभी, एंड व्हाट लाइज अहेड। तो अभी रिसेंटली 5 साल हो गए हैं इस जजमेंट को, ठीक है। द जजमेंट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू प्राइवेसी एज बीइंग अ फंडामेंटल राइट stemming from the right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution. The bench also held that while the right to privacy is intrinsic to an individual's ability to exercise bodily autonomy, it is still not an absolute right in and of itself, placing limitation in a manner similar to those placing on the right to free speech and expression. अब ground reality की बात करें तो ground reality for the citizenry has not changed much either. Data security breaches which result in loss and theft of the personal sensitive data have not reduced in terms of measurable frequency or their impact. It is stated that Puttaswamy judgment has missed the mark quite spectacularly for the objective that was sought. Our next important headline is Shadow over Soren. Available है पेज नंबर 6 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना, सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये क्यों न्यूज में था अभी रिसेंटली, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, ही इज लाइकली टू बी डिस्क्वालिफाइड बाय द गवर्नर एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द केस अगेंस्ट हिम हैज its roots in a mining lease that he gave himself as a minister for mines in 2021. BJP complained to the governor in this year's February. This act was in violation of Section 9 of the Representation of People Act 1951. Governor referred to the complaint to Election Commission of India for its opinion as required by the law. And recently, Election Commission of India wrote to the governor that Mr. Soren could be disqualified under Section 9 of the Representation of People Act, right? Our next important headline is Murder in the Sewer. Available है पेज नंबर 6 पे और related है पेपर 1 social issues से। In this article, we have to know what is manual scavenging, why it is still prevalent in India, government measures to tackle it, and what more steps need to be taken in this context. तो इन सारे पॉइंट्स को हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और उसका लिंक कहाँ मिलेगा आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज द ग्रेट गोदावरी फ्लड्स। अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे और रिलेटेड है पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ गोदावरी फ्लड्स, वी शुड नो अबाउट द फ्लड्स इन इंडिया, कॉजेस, इकोनॉमिक लॉस एंड मेजर्स। तो फ्लड्स को हमने बहुत ही अच्छे से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल फंक्शन ऑल ईयर, जस्टिस ललित। अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और रिलेटेड है पेपर 2 जुडिशरी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्यों है ये न्यूज में, जस्टिस उदय उमेश ललित, ही इज गोइंग टू टेक ओथ एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 27, यानी कि आज। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें, CGI and the judges of Supreme Court are appointed by the President under Clause 2 of the Article 124 of the Indian Constitution, right? Our next important headline is Army speeds up procurement of light tank Zorawar for line of actual control. Available है पेज नंबर 9 पे और रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है जानना जोरावर के बारे में। तो क्या है ये जोरावर, न्यूज में क्यों है ये भी, क्योंकि इंडियन आर्मी इज एंगेजिंग विद इंडस्ट्री टू डेवलप न्यू लाइट टैंक कैपेबल ऑफ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर needed to deal with the unique challenge posed on the Ladakh border by China. अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखें, advanced talks are on with the Indian companies under Army's project Zorawar for new Indian light tank that will have modern features. कौन से फीचर्स होंगे इसमें, like integration of artificial intelligence, drones warfare and active protection system. Our next important headline is Achieving 2070 net zero target could boost India's GDP report. Available है पेज नंबर 9 पे और रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जाना, हमें जाननी है फाइंडिंग्स एंड सजेशंस ऑफ द किसके, गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो रिपोर्ट की। तो ये जो रिपोर्ट है, it contains new research and modeling and it finds that
policies initiated to clean energy transition will be crucial in determining when India achieves net zero emissions and how much it could benefit from it. A report found that achieving net zero carbon emission by 2070 could boost India's economy by as much as 4.7% above the projected baseline growth in GDP terms by 2036. It could also create as many as 15 million new jobs by 2047, right? Our next important headline is Center picks 75 tribal districts for TV intervention project. अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और रिलेटेड है पेपर 2 हेल्थ सेक्शन से. इस आर्टिकल में हमें हमें जानना है आश्वासन कैंपेन के बारे में और अदर रिलेटेड इनिशिएटिव्स टू टैकल ट्यूबरकुलोसिस. अगर हम आश्वासन कैंपेन की बात करें तो इट इज अ कैंपेन टू डिटेक्ट टीबी केसेस अक्रॉस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स अंडर विच डोर टू डोर स्क्रीनिंग इज डन. It was undertaken by Tribal Affairs and Health Ministries, supported by United States Agency for International Development as a technical partner and Piramal Swasthya as the implementing partner. Our next important headline is Vishnugadh project likely to face inquiry. Available है पेज नंबर 10 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से. इस आर्टिकल में हमें जानना है विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में एंड व्हाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड हैव बीन कंट्रोवर्शियल इशू. तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इट इज बीइंग बिल्ट बाय टेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड इट इज प्राइमरली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक. ये खास बात है. इट वाज सैंक्शनड इन 2011 एंड इट इज प्रपोज्ड टू बी कंप्लीटेड कब तक? 2023 तक. ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक. अब कंट्रोवर्सी की बात करें कि क्यों कंट्रोवर्शियल होते हैं यहाँ पे. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड हैव बीन कंट्रोवर्शियल इशू particularly since 2013 following the 2013 floods in Kedarnath that killed at least 4,000 and caused widespread destruction, right? Our next important headline is CBI records conviction rate of 67.56% in 2021. Available है पेज नंबर 10 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से. इस आर्टिकल में हमें जानना है व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एनुअल रिपोर्ट. So it found that CBI recorded conviction rate of 67.56% in 2021 as compared to 69.83% in 2020, right? Our next important headline is Practo told to make its app disabled friendly. Available है पेज नंबर 10 पे और रिलेटेड है पेपर 2 सोशल जस्टिस से. इस आर्टिकल में हमें जानना है चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में. रिसेंटली क्या हुआ है कि कोर्ट ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑर्डर द प्रैक्टो. प्रैक्टो क्या है? ये ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है. इसको क्या ऑर्डर दिया गया है? टू मेक इट्स वेबसाइट एंड ऐप फुली एक्सेसिबल टू फॉर द डिसेबल्ड. ठीक है, अगर हम इनकी मैंडेट की बात करें तो मैंडेट इनकी क्या है? टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द स्टेट कमिश्नर्स फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स डिसबर्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टेक स्टेप्स टू सेफगार्ड द राइट्स एंड फैसिलिटीज मेड available to the person with disabilities. Next and last important headline is digital lending rules set to spark disruption. Available है पेज नंबर 12 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से. इस आर्टिकल में हमें क्या जानना है? इंडियाज डिजिटल लैंडिंग रूल्स के बारे में, एसोसिएटेड इश्यूज क्या हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. तो इंडिया के जो स्ट्रिक्टर डिजिटल लैंडिंग रूल्स हैं they have disrupted card services for foreign backed fintech firms and jeopardized loan offerings of Amazon, prompting companies to chart a lobbying pushback according to industry sources and a document seen by Reuters. तो आज के लिए इतना ही. Thanks for watching. Have a nice day.